मुस्कुराता हुआ चेहरा मतलब एक ऐसा वाकया जहां पे मुस्कान आई थी भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरों पे भी। उसकी वजह थी वीवीएस लक्ष्मण जिस टीम में थे, वो इंडियन टीम। साल था 2010। वीवीएस, आर यू रेडी टू गो बैक? 2010 डर्बन, 1-0 से पीछे भारतीय टीम सेंचुरियन में हार के एक और स्पाइसी मुकाबला, एक स्पाइसी विकेट पे, जहां टॉस जीत के साउथ अफ्रीका ने कहा आइए चखिए थोड़ा स्पाइस बैटिंग कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल चैलेंजिंग विकेट था, प्रॉब्ली द टफेस्ट विकेट मेरे करियर में जो साउथ अफ्रीका में मैंने देखा है। क्योंकि फर्स्ट टेस्ट हारने के बाद, क्योंकि सेंचुरियन में हम खराब बल्लेबाजी की। आई स्टिल रिमेंबर द प्रिपरेशन टू दैट सीरीज। अभी काफ़ी प्लेयर्स जो है पहले ही चले गए एंड वी ऑल प्रैक्टिस इन गैरिस एकेडमी, क्योंकि वी वांटेड टू डू वेल इन दैट सीरीज एंड लॉट ऑफ अस वी न्यू दैट वी वुड बी प्लेइंग आवर लास्ट सीरीज इन साउथ अफ्रीका। क्या आप सब ने आपस में बैठ के मैच से पहले डिड यू शेयर योर फीलिंग्स व्हाट द गेम मेंट टू? या आई थिंक डर्बन पहुंचने से पहले हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि वी वर ऑल वेरी डिसअपॉइंटेड जिस तरह हम सेंचुरियन में हार गए थे, बिकॉज वी वेंट विद अ लॉट ऑफ होप और प्रिपरेशन भी बढ़िया था। साउथ अफ्रीकन विकेट्स के ऊपर 10 दिन प्रैक्टिस करना इसे लग्जरी उस समय में ज़रूर एक प्रैक्टिस मैच नहीं था पहले टेस्ट मैच के पहले। लेकिन पूरा टीम जो है आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट दे ऑल वेंट टू सन सिटी. Some of us stayed back. I remember Zach, myself, I was struggling with my back pain, so I was not allowed to travel. It was a road journey, Joburg se Sun City. Sachin stayed back, Gautam stayed back, Viru stayed back. So 6 of us actually stayed back in Joburg, and Zach organized. Zach had a lot of friends in Joburg, so he organized practice session for us. And myself, Zach, all of us went and did 3 practice sessions when the rest of the team was in Sun City. But when we reached Durban, I remember the entire team got together and we had a chat with the coach and the bowling coach. I still remember that we didn't bowl also well, or didn't bowl to our plans in Centurion, and we were all fired up leading to this Durban test match. But I still remember those 3 days where 6 of us spent in Joburg. We all were fired up that this is the chance, we have to make a comeback to level the series in Durban. ये भी टॉस पे क्या क्या होता है, खिलाड़ी प्रैक्टिस ऑर्गेनाइज कराते हुए, हाउ वेल मे बी समटाइम्स यू नो द कंट्री एंड कैन अरेंज फॉर दीज थिंग्स, लेकिन शायद इसीलिए जो विकेट थी वीवीएस एंड मे बी बिकॉज ऑफ हाउ द बॉलिंग हैड डन इन द फर्स्ट गेम, चेतेश्वर पुजारा के रूप में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाया. Batting was something which let us down in the first test, and we knew that seeing the wicket, it was again going to assist the South African bowlers or assist the फास्ट बॉलर्स, क्योंकि उतना आसान होने वाला नहीं था. डर्बन इज़ लाइक पर्थ जैसा ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है बॉलर्स को. डर्बन का विकेट भी वैसे है कि जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है तेज़ गेंदबाज को, और लैटरल मूवमेंट भी मिलता है. So we wanted to strengthen our batting lineup, and Puji came into that playing 11, and we expected him to do well because we always regarded him as someone who was very talented. Not only being talented, but was someone who was mentally tough. Because अगर आपको उस condition में perform करना है, it's not only about your skill, it's how you think and how you embrace the challenge. 205 is what India got. Remember, they were a bowler short. They were playing 4 bowlers, fourth being that lone spinner in Harbhajan Singh. VVS, अगर वापसी का कोई भी रास्ता तय करना था, almost like what had happened in Joburg in 2006, साउथ अफ्रीका को 131 पे आउट किया, लेकिन यहाँ सिर्फ पेसर्स नहीं, हरभजन सिंह ने वो जो 4 विकेट निकाले. Just talk us through that. जी हाँ, और बढ़िया गेंदबाजी की हरभजन सिंह ने, क्योंकि ज़रूर थोड़ा मदद मिल रहा था, क्योंकि हरभजन was again in good form, good rhythm, and the way he was extracting that bounce from the off stump, outside the off stump line, and the batsmen, South African batsmen, were forced to play at the ball, and Harbhajan always was at his best when he was drifting the ball towards the slip fielder, and then he was getting that bounce off the wicket, and which exactly happened. I still remember some of the dismissal. I think a couple of them were caught at the short leg and backward short leg, and along with Bajji, I thought Zach bowled brilliant again. He was आराम से रन नहीं दे रहे थे, लेकिन विकेट भी चटका रहे थे. और श्रीशांत का वो बॉल मैं कभी भूलूंगा नहीं, जिस तरह जैक कैलिस को आउट किया था, आगे से एकदम जो बॉल स्टीप बाउंस लेकर, जैक कैलिस हैड नो क्लू कि बॉल कहाँ पे है. जैक अगेन गॉट हिज, आई वुडंट यूज द वर्ड bunny, but Graham Smith was that to Zach. I mean, you could see the face of Graham Smith when he was facing Zach. He had no clue where the ball was coming, whether it's coming in or whether it's going out. And then everyone contributed and took wickets, and we also held some brilliant catches to get that win. Some of the best batsmen were troubled in the Indian camp in the second innings as well, before VVS Laxman again came and did what he did so many times. शतक VVS नहीं बना था, लेकिन where do you rank
that 96 was it, I believe 96 96 yeah one of the best क्योंकि ज़रूर ख़राब लगता है कि जब आप इतना करीब आते हैं वो माइलस्टोन के वो होता नहीं है. I still remember Srishant was my non-striker and we had lost all the wickets and he was the last one there. So I wanted to hit a boundary, but overall it was quite a satisfying knock because none of the other batsmen from both sides got a half century on that surface. And for me to go out, because जैसे मैं आपको इतनी बार बोल चुका हूँ कि ऐसे conditions में जहाँ पे बल्लेबाजी करना मुश्किल है या सिचुएशन में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव है, I always wanted to do well for my country. And again, like in जोबर्ग जो 2006 में हुआ, जहाँ पे मेरा और जैक का पार्टनरशिप था, इस मैच में भी डर्बन में मेरा और जैक का पार्टनरशिप था. हमारा पार्टनरशिप Did it help because आप लोग रूममेट्स भी थे? वही बोल रहा था कि हमारा पार्टनरशिप जो है 2001 से शुरू हुआ, जहाँ पे मैं और जैक रूममेट्स थे वो ईडन टेस्ट मैच में. लेकिन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप था फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, जहाँ पे द मैच the South Africans felt the match was taken away from them because they just sense when they got the top order batsmen out and me and Zach and then the rest of the bowlers to follow on that wicket, which was quite tricky. They felt that they could wrap up the innings quite easily. But then me and Zach had that partnership and we gave ourselves the best chance to beat them. When you won this game, पिछली बार जोबर्ग में fined for getting a little too wild in the dressing room. इस बार much more measured. अब आदत हो गई थी ना, it wasn't the first. Yeah, much more measured and we were very happy and we were delighted that we won, but we had still one more test match to go because again, going back to what happened in 2006, after winning the Joburg test match, we lost the series. So that is something which we didn't want to do and we were all focusing while we had our quiet celebration and we had a New Year's Eve party. We wanted to go to Cape Town and win the series. So that वो ही एक लक्ष्य, वो ही एक टारगेट, वो ही एक गोल सबके जहन में था, सबके दिमाग में था. One of your दिल के सबसे करीब man of the match awards? बिल्कुल. One of my favorite matches because उस विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करना was very challenging and to get runs in that way is something which I still cherish. Because it was not against a mediocre bowling attack, it was against a quality bowling attack who knew how to bowl in those conditions. So definitely एक यादगार match मेरे लिए और that contribution of mine is something which I cherish a lot even now. So do all the fans VVS and they will continue to. Back का बहुत एक important role रहा है आपके करियर में, आपकी back spasm, लेकिन जिस तरीके से आपने you always had India's back and you always got India back in these matches. Once again from the entire community of Indian fans, thank you.